एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ फ्लॉलेस ब्राउ ट्रिमर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है फ्लॉलेस फेशियल रिमूवर के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा देन प्लीज क्लिक हियर टू वॉच इट। आई हैव डन अ कंप्लीट रिव्यू एंड आई हैव आल्सो शोन अ डेमो ऑन दिस प्रोडक्ट, सो प्लीज डू वॉच इट। एंड दिस प्रोडक्ट हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि फ्लॉलेस ब्राउ हो घर में बैठे बैठे, वो भी पेनलेस। तो ये है वो प्रोडक्ट और ये मैंने लिया है Amazon से और इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 399 रुपीज। आई विल लीव द लिंक टू दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज हैव अ लुक एट इट। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक टू बाय दिस प्रोडक्ट, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हियर इज द प्रोडक्ट और इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वाले जैसे ही है ऑलमोस्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, इट्स रिटन हियर बॉक्स में एज सीन ऑन टीवी, इट्स अ न्यू फ्लॉलेस brow trimmer, removes hair instantly and pain free, perfect for eyebrow, gentle on all skin types। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है, which I'm not sure about because ओरिजिनल प्रोडक्ट में हो सकता है। I don't think so this is ओरिजिनल प्रोडक्ट, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है दैट इज लिटिल मोर एक्सपेंसिव। तो ये 399 में 18 कैरेट गोल्ड, सो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट हैज अ बिल्ट इन लाइट व्हिच लेट्स यू सी इवन द फाइनेस्ट हेयर। सो ये है प्रोडक्ट का जो पूरा पैकेजिंग। अब इसे खोलते हैं और जब खोलते हैं तो इसके साथ एक पूरा एक गाइड आता है, क्विक स्टार्ट गाइड आता है, जो आपको पूरा बताएगा कि इसे कैसे यूज करना है। वॉट एवर एवरी इंस्ट्रक्शन इज गिवन रियली वेल हियर। तो ये ऐसे ट्रे में आता है, तो यहाँ पे है वो प्रोडक्ट और यहाँ पे एक ब्रश है। तो मेरे इस प्रोडक्ट में बैटरी यहाँ पे नहीं है, ये एक बैटरी की जगह है, बट बैटरी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी हैज बीन ऑलरेडी पुट इनसाइड दिस। सो इफ यू रिसीव प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे पहले वीडियो में फ्लॉलेस हेयर रिमूवर में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आई हैव नॉट रिसीव्ड दिस प्रोडक्ट विद बैटरी इज नॉट देयर। प्लीज चेक द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली, बिकॉज मेरे इस प्रोडक्ट में जब ये आया था मुझे भी लगा था यहाँ पे बैटरी नहीं है, लेकिन जब मैंने खोल के देखा इसमें ऑलरेडी बैटरी था। सो किसी प्रोडक्ट्स में बैटरी यहाँ है, किसी में अंदर है, सो आप प्लीज चेक कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है देन यू प्लीज रिटर्न इट, बट अदरवाइज आई एम श्योर बैटरी वुड बी इंक्लूडेड। तो ये है प्रोडक्ट जो बिल्कुल एक पेन की तरह है। यहाँ पे जो बैटरी है जो इसके अंदर है, और ये है ब्रश टू क्लीन, टू डू ऑल द क्लीनिंग। तो इसे मैं साइड में रखती हूँ। ये है वो प्रोडक्ट, it's just like a pen, and I will also show comparison between the eyebrow trimmer and the facial hair remover। So ये बिल्कुल एक पेन की तरह है और बिल्कुल एक पेन की तरह हम इसे लिख सकते हैं। वेरी कॉम्पैक्ट, इजी टू कैरी, कोई वेट नहीं है, वेरी इजी, कॉम्पैक्ट एंड ऑल्सो वेरी ट्रैवल फ्रेंडली आई एम श्योर, बिकॉज बहुत ही इजी से कैरी हो जाता है। तो यहाँ है वो ट्रिमर जो जहाँ से हम ट्रिम करेंगे, और जब यहाँ पे एक बटन है और जब हम इसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे वो लाइट भी चलेगी और वाइब्रेट टाइप साउंड भी आएगा। देखिए यहाँ पे वो लाइट भी जल रही है। मैं आपको इस प्रोडक्ट का एक क्लोजअप देती हूँ अभी। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था तो मेरे को एक बैटरी इसके अंदर ही मिला था। अगर आपका बैटरी बाहर है और आप इसे डालने चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इसको ऐसे ही निकालना। यहाँ पे आप बैटरी लगा के इसे वापस बंद कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्लोज इट एंड कीप। एंड ऑल्सो दिस प्रोडक्ट हैज AAA बैटरी विच इज इजिली अवेलेबल। तो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुश दिस बटन ऑन टॉप, और यहाँ पे लाइट जलती है, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स go ahead and use it. I will give you an honest opinion whether this works or not. My eyebrows are almost done, but there are still some extra out here and some out here. Let's try. I will also try this on my upper lip, because if this works for upper lip, there's nothing like that. So let's go ahead and give it a try.
Guys, this works really well. This works really well. I got excited क्योंकि यहाँ पे जो बाल है वो इतना easily निकल के आया. So this actually works really well. Now let's go ahead. मैं पूरा देखती हूँ. Oh my God. Oh my God, even the finest hair, even the smallest of smallest hair, it is able to take it out. I can see how clean my eyebrows have become out here. यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बाल थे और मैंने उससे ट्राई किया है, एक्चुअली बहुत अच्छे से निकला है. आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरी आईब्रो को इसने क्लीन किया है. लाइक आई सेड, आई हैड गॉट दिस डन रिसेंटली, बट फिर भी यहाँ पे और यहाँ पे छोटे छोटे बाल थे और यहाँ पे भी, तो बहुत अच्छे से इसने मेरे जो एक्स्ट्रा स्मॉल फाइनेस्ट हेयर है उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया है. आई एम गोइंग टू ट्राई दिस इवन ऑन दिस साइड. One thing what I've heard is, अगर आपके बाल एकदम से इससे नहीं निकलते, so try pulling your skin, try pulling it and then try to remove. तो आप अगर पुल करके इसे निकालते हैं तो ये प्रॉपरली निकलता है. Now I'm just going to try this on my upper lips also. I want to say that I'm very happy with this product. It actually removes very small hair very easily and there's absolutely no pain. बिल्कुल भी पेन नहीं है इसे यूज करने में. आप देख सकते हैं मैं इसे बार बार अपने हाथों में भी रब कर रही हूँ. There's absolutely no pain. ये कोई ब्लेड नहीं है तो इसका कोई शार्प एज भी नहीं है जिससे आपको हर्ट करेगा. आप आराम से अपनी स्किन में इसे यूज कर सकते हैं. आईब्रो में जिस डायरेक्शन में आपके बाल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसे निकालने की कोशिश करिए. अगर उस डायरेक्शन में भी नहीं निकलता है देन यू कीप ट्राइंग इट, इट विल डेफिनेटली कम ऑफ. ये बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है. इफ द हेयर डजंट कम आउट, जस्ट पुल योर स्किन एंड देन जस्ट टेक इट ऑफ. This works really well. I wanted to try this or even on my upper lip just to see whether it could take off those fine hair, and it could easily do that. So this is a great product. I loved it and I'm going to keep this always in my bag, especially when I'm traveling and all. कभी कभी ऐसा होता है कि हम पार्लर नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ होता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, एकदम से कुछ पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है and you're not ready, you don't want to go to the parlor or any reason. Try using this. This really works. बिल्कुल पेनलेस है. आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, बार बार इसे यूज कर सकते हैं. बैटरी रुक जाती है तो आप बैटरी बदल के देखिए. ये प्रोडक्ट जरूर वर्क करता है और ये बहुत ही अच्छे से फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट हेयर को निकाल सकता है. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट शेप, उसके लिए तो आपको पार्लर ही जाना पड़ेगा. बट दिस रियली वर्क्स वेल टू रिमूव दोस एक्स्ट्रा हेयर which you can get it done quickly, no time जब आपको कहीं जाना हो. So I quite love this product and Amazon में this is easily available. I will leave the link of this product in the description box, so please have a look at it. Now I'm going to compare the flawless hair remover with this flawless eyebrow trimmer. As you can see, ये बिल्कुल एक पेन की तरह है. ये थोड़ा थिक है और यूज की बात करें, इफेक्टिव की बात करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव है. दिस वर्क रियली वेल टू रिमूव द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट हेयर, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है. ना बार जब मैंने फ्लॉलेस हेयर रिमूवर का वीडियो किया था मुझे बहुत कमेंट्स है ये पूछ के कि इसको यूज करने के बाद क्या हेयर ग्रोथ होता है, और आई एम श्योर इससे भी आएगा क्वेश्चन कि इससे यूज करने के बाद भी क्या आईब्रो बहुत जल्दी ग्रो होता है. मैंने इसे पहली बार यूज किया है एंड आई क्वाइट लव्ड इट, तो मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं. और
बाल जो regrow होता है, that also depends a lot on our genes. तो ऐसा नहीं है कि if it doesn't grow for me, it will grow for you, or if it is growing for you, it will not grow for me. So it depends from person to person. मैं बार-बार से mention कर रही थी comment में. It depends from person to person. Do buy it, give it a try. This one I am telling you, I can give a full guarantee on this product because I quite loved it. I used it for some time and I really loved it. और मैंने यहाँ से forehead से भी थोड़े-थोड़े बाल निकाले हैं, तो मुझे बहुत effective लग रहा है. I think I'm going to be using this continuously. So go ahead, guys. I'm not making a video for the sake. This is my honest review on this product. This is not a sponsored video. So this is my honest review. This works really good. So this was my review and demo on this product, Flawless Eyebrow Hair Remover or Flawless Eyebrow Trimmer. I hope you liked it. If you did, then please give this video a thumbs up. Please do share this with your family and friends. Before you go, please do not forget to subscribe and also click on the bell icon so that you know whenever I upload my video. Also, do comment below if you bought this or if you're using this or if you're planning to buy it. Please comment below and let me know. I'm going to give 4 out of 5 on this product because I really loved it. So I'm going to see you all soon with more videos. Thank you so much for watching. Till then, bye.